Okay, beta, we have discussed in the first two videos the linear function and the non-linear function, or I can say one-to-one function and a function. Okay. We also have discussed the mapping. Now see the exercise. This is exercise 9.1. यहाँ पर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज नॉट अ फंक्शन. ठीक है, स्टेट योर रीज़न. तो नंबर वन, वी हैव डिस्कस टू कंडीशंस फॉर फंक्शन कि ऑल द डोमेन एलिमेंट्स यानी ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स मस्ट बी यूज्ड इन द मैपिंग एंड नन ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स कैन बी यूज्ड ट्वाइस. ठीक है, कोई भी एक्स की वैल्यू दो दफ़ा यूज़ नहीं कर सकते. तो सी द फर्स्ट पार्ट, all the domain elements. For a function we just have to see the domain, the x values. So all the x values are used and none of the x value is used twice, so it means that the first part is representing a function. But in the second one you can see that 2 is used twice for 2 range. ठीक है, तो it means that this is not representing a function because according to our condition none of the domain element, none of the x values can be used twice. So it means that this is not a function because the value of x, that is 2, is used twice for 2 ranges. Okay, the third one is representing a function. You can see that all the domain elements are used and none of the domain element is used twice. So this is representing a function. This is also representing a function. You can see that all the domain elements are used and none of the domain element is used twice. So this is also representing a function. For a function we don't have to see the range. So this is a function, this is a function, this is a function, but this is also called a one-to-one function because for each value of x there is a unique value of y. ठीक है, तो this is also called a one-to-one function. Understand? Now see from the graph, determine whether the relation is a function or not. State your reason. So you can see this is a straight line, the first one. If I take x is equals to 1, okay, can you see anywhere else on the line 1? No, you can't see because 1 is only here. Check. In the same way, if I say if I am taking x is equals to 2, so you can't see x is equals to 2 anywhere else on the line. ठीक है, if I say x is equals to 0 over here, तो you can't see anywhere else on the line कि x 0 हो वहाँ पर. ठीक, तो this straight line is representing a function, but this straight line is also representing a one-to-one function because if x is 1 and let's say y is 2, ठीक, तो you can't see y is equals to 2 anywhere else on the line. सही, इसी तरह यहाँ पर अगर x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू 0 है तो पूरी लाइन पर y 0 और कहीं नहीं मिल रहा आपको. तो इट मीन्स कि द स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ one-to-one function. So this is a function, but this is also a one-to-one function. Understand? अच्छा, now for this curve, is this representing a function? We have to check the value of x. If x is 1 here, यहाँ पर x की वैल्यू अगर 1 है तो पूरे ग्राफ पर देर इज़ यू कांट सी एनीवेयर एल्स ऑन द लाइन के x की वैल्यू 1 हो वहाँ पर. इसी तरह इफ़ x इज़ 2 हेयर, यहाँ पर x की वैल्यू 2 नज़र आ रही है तो पूरे ग्राफ पे, पूरे कर्व के ऊपर x की वैल्यू 2 और कहीं पर नहीं है. ठीक है, तो इट मीन्स कि दिस
quadratic curve is also representing a function, but this is not a one-to-one function because you can see that there are two values of y here. ठीक है, अगर यहाँ पे -3 है तो यहाँ पर भी -3 है, यहाँ पर अगर 3.5 -3.5 है तो यहाँ पर भी 3.5 है, यानी -4 से लेकर 3 तक all the values of y are repeating. So we said कि if the values of y are repeating, so it is not a one-to-one function. This is representing a function, but this is not a one-to-one function. ठीक है, because for a one-to-one function the values of y must also be unique. ठीक, and for a function all the domain element, all the x values must be used and none of the x value can be used twice. तो इस पूरे ग्राफ पर कोई भी x की वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, लेकिन क्योंकि y की वैल्यू रिपीट हो रही है तो ये वन टू वन फंक्शन तो नहीं होगा, लेकिन फंक्शन ज़रूर होगा. ओके, इस वाले अगर ग्राफ को देखें, थर्ड वाले को, तो यहाँ पर यू कैन सी फ्रॉम 0 to 1 x की वैल्यूज़ भी रिपीट हो रही, यानी अगर x यहाँ पर 1 है तो x की वैल्यू यहाँ पर भी 1 है. अगर x की वैल्यू यहाँ पर 0.5 है तो यहाँ पर भी x की वैल्यू 0.5 है, यानी 0 से लेकर 1 तक सारी x की वैल्यू यूज़ हो रही हैं. तो हमने कहा था कि द वैल्यूज़ ऑफ x या द वैल्यूज़ ऑफ डोमेन कैन नॉट बी यूज ट्वाइस. ठीक, तो इट मीन्स कि दिस कर्व इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन. ओके.